मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग बट थोड़ी डिफरेंट चीज ली हुई है। पिछले कुछ दिनों से हम वर्ब के टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो ये भी उसी का एक एक्सटेंशन है। आज हम डिड एंड हैड के बारे में बात करेंगे। अगर हम डिड की बात करें तो डिड बेसिकली मीन्स सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, कम इज द फर्स्ट फॉर्म and came is the second form. So we are talking about came or had come. Which one is to be used when? That's the discussion. जब मैं छोटा था, when I was younger and I was in class 9 or 10, तो मैं अपने टीचर से पूछता था, sir, when to say I came and when do we say I had come? And my teacher would tell me that if you came very recently, like say yesterday, so then it is you came, I came. But when you came last year, so it's you had come or I had come. So that's it. But is it really so? Much later I found out, no, it's not like that. It's something different. How? I will tell you. But first I want you to read these 4 sentences, actually sentence combinations. This one is 1 and this one is 2. इसके थ्रू मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा कि had कब यूज करना है और did या सेकंड फॉर्म कब यूज करनी है। आप रेंडमली नहीं बोल सकते कि I came to you yesterday or I had come to you yesterday. No, इसके पीछे साइंस है, लॉजिक है, और एक बार वो लॉजिक आपको क्लियर हो गया, लाइफ में आप कभी मिस्टेक करेंगे नहीं। ये चीज हमेशा आपको एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर रहेगी। लेट्स सी, he had come home and he came home. Both these sentences refer to an action in the past. वो घर पे आया, वो घर पे आया। कई लोग बोल रहे हैं वो घर पे आया था, इसमें था नहीं लगाया, बट व्हाट्स द डिफरेंस? आप लगाए ना लगाएं, मीनिंग तो सेम है। He had not come home, he did not come home. यहां पे इन दोनों कम में मैं डिफरेंस अगर बताऊं तो ये कम आपका थर्ड फॉर्म है और ये कम आपका फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि डिड के साथ आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो देखो, इस तरीके से आप कभी इसको क्लैरिफाई कर नहीं पाओगे, आप हमेशा खुद भी कंफ्यूज रहोगे, आप दूसरों को भी कंफ्यूजन में डालोगे। तो हियर इज माई ट्रिक। I am going to tell you a trick by using which you will never be confused about the use of did, second form, or had. So here it is, guys. The difference between did or second form and had. So here is this timeline. We call it timeline. This is time from here to here. It's a continuum of time, past to present to future. So let's call it present moment, PM. This point here, right? This is the moment where we are standing right now. अभी जिस मोमेंट पे हम बात कर रहे हैं वो ये है प्रेजेंट मोमेंट। इससे आगे जो कुछ भी आपका टाइम है ये सब होगा आपका फ्यूचर, फाइन। एंड जो भी इससे पीछे है आपका टाइम उसको आप बोलेंगे पास्ट। आई होप इट्स फाइन अप टू दिस पॉइंट। अब देखिए, आप एक छोटी सी ट्रिक और सेकेंड फॉर्म एंड हैड की प्रॉब्लम हमेशा के लिए रिजॉल्व। सपोज समथिंग हैपेंड हियर, राइट हियर, which was one day back. Suppose there is a difference of one day between the two. ये आज है और ये कल की बात है, yesterday की। Something happened here. What's that? I came home. ठीक है? तो आप इसको हमेशा, if there is one action, as long as there is one action, you will always make it in second form. You will never ever use had. That's the point. अब सपोज ये यहां पे नहीं होता, लेट्स रब इट, फाइन, एंड लेट्स से दैट दिस इंसिडेंट हैपेंड हियर, से 4 days बैक। अगेन यू विल मेक इट इन द सेम टेंस, विच इज आई केम होम, सेकंड फॉर्म। So it doesn't really matter whether this is happening 1 day prior, 2 days prior, 4 days ago, or 4 years ago, or 400 years ago. As long as जब तक
आपकी एक सिंगल इंसिडेंट पास्ट में हो रही है, चाहे वो कल हो, चाहे वो 100 साल पहले हुई हो, आप उसको हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। हाउएवर, जब आपके पास्ट में दो एक्शंस हो रहे हों, वन इज हियर एंड द अदर वन इज हियर, सपोज ये हुआ आपका 10 डेज पहले और ये हुआ आपका 20 डेज पहले, ठीक है, या 20, इट डजंट रियली मैटर, इट्स जस्ट हाइपोथेटिकल। इससे थोड़ा सा ज्यादा हो, चाहे 10.5 दिन भी हो, 10.5 डेज, चाहे 11 डेज हो, चाहे 12 डेज हो, इससे ज्यादा हो, थोड़ा पहले, 1 सेकंड भी पहले हो गया तो इससे पहले हो गया, ठीक है। सो वन एक्शन इज हियर एंड द अदर वन इज हियर। ये प्रेजेंट से 10 दिन पहले का है, ये प्रेजेंट से 20 दिन पहले का है, 20 डेज। तो व्हेन यू हैव टू एक्शंस हैपनिंग इन द पास्ट, वन बिफोर द अदर, दिस वन बिफोर दिस वन, तब आप यूज करते हैं दोनों टेंसेस, पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट परफेक्ट। माइंड यू, this is the only situation where you have two actions happening in the past, one after the other. Then for the further action which is further away in the past, into the past, ये ज्यादा दूर हो गया, distant one, इसके लिए आप past perfect यूज करेंगे। जो नियरर होगा, प्रेजेंट मोमेंट के नजदीक होगा, बाद में हुआ होगा, उसको आप हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे। अगेन, अगर एक एक्शन होगा, चाहे वो यहां पे हो, चाहे यहां पे हो, चाहे यहां पे हो, उस पे आप ओनली पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई केम होम, आई केम होम लास्ट ईयर, आई केम होम 10 years ago, I came home 100 years ago, I came home 1 lakh years ago, I came home 1 million years ago. Fine, there's no dispute about that. But when you have two actions happening in the past, one after the other, तब आप दोनों टेंसेस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लाइक यहां पे मैं घर पे आया, इस मोमेंट पे मैं घर पे आया और यहां मैंने अपना काम कंप्लीट किया। तो पहले मैंने अपना काम कंप्लीट किया, फिर मैं घर पे आया। सो हियर यू यूज, लेट मी यूज अनदर मार्कर, दैट्स ब्लू। आई केम होम आफ्टर I had completed my task. That's it. So the sentence is, I came home after I had completed my task. Or it could be turned around by using another conjunction. In place of after, we can have before. I had completed my task before I came home. तो आप देख रहे हैं, चाहे हम उसको पहले रखें चाहे बाद में रखें, बट हैड वाला सेंटेंस वो होगा जो फर्दर अवे पास्ट में हुआ है, और डिड या सेकंड फॉर्म वाला वो है जो पास्ट में हुआ है। पास्ट में मतलब नजदीक है प्रेजेंट मोमेंट की, उससे दूर नहीं है, उसके पास में है, और इस वाले से पहले पड़ता है। तो पहले वाले को सेकंड फॉर्म में और दूर वाले को हैड। अब इसकी हम दो एग्जांपल्स और आपके सामने लेंगे और अपने टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। So here are the two examples I was talking about. The patient recovered, the patient had recovered before the doctor came. This sentence has again been reframed by using, here we have used this word before, and here in place of before we have used the word after. Fine. So both these words are used. If you are using before, तब had वाला part आपका पहले आता है, बट इफ यू आर यूजिंग आफ्टर, तो हैड वाला पार्ट आपका बाद में आता है। बस इतना ध्यान रखना है, आप कोई सा यूज करें, आपकी चॉइस। सो द पेशेंट हैड रिकवर्ड बिफोर द डॉक्टर केम। एक्चुअली आई विल टेल यू अ लिटिल स्टोरी। व्हेन आई वाज यंगर, माय टीचर यूज्ड टू टेल मी द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। आई थॉट लेट अस बी अ लिटिल ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव अबाउट द हेल्थ ऑफ द पेशेंट, लेट्स नॉट अलाउ हिम टू डाई just for the sake of our sentence. So I have slightly modified it. The patient had recovered before the doctor came. Fine. Or in other ways, the doctor came after the patient had recovered. Means the arrival of doctor was redundant, unnecessary. So guys, this is how you use here. This is present moment. This is the point when doctor came, and this is the point where patient actually had already recovered. So patient had recovered before the doctor came, or the doctor came after the patient had recovered. So you have two
actions happening in the past, one after the other. The action which is further away into the past is made using had plus third form, while the one which is in proximity with the present moment is made using did, or the second form of the verb. So guys, after this, I hope you will not struggle with the uses of did or second form or had, and you will always be confident about the same. We will keep bringing many more such interesting videos. If you like it, please subscribe so that you can receive the notification of the next video on your mobile.